हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू StudyBUZZ। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट कनेक्टेड है, आदित्य गोयल, who has scored 97.89 percentile in CAT. He is someone who comes from a very humble background, average scores in 10, 12 and graduation, and he is someone जिनके मॉक्स में 40, 50, 60 परसेंटाइल थे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे CAT एस्पिरेंट्स होंगे जो इनकी स्टोरी से रेजोनेट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, एंड प्रोबेबली यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन कि अगर आपके आज की डेट में जब आप ये वीडियो देख रहे हो 40-50 है तो भी यू कैन इंप्रूव to 97.89 percentile. So we will try to understand the complete journey, क्या preparation strategy थी, जो demotivation हुआ उससे कैसे recover करा, and what made him successful and scored this percentile. So welcome Aditya Goel to the show. Thank you so much for taking out time. Thanks for having me, sir. So very first obvious question, Aditya, you made it to IIMS, which is the probably the dream college of every MBA aspirant. How is that feeling? So it is great. MBA life, and that too from an IM. It is just great. Okay, so Aditya, I remember talking to you before as well, but for the audience, for the aspirants who are listening to you for the very first time, is it actually true that you were scoring 40, 50, 60 in mocks and then on the D-Day you scored 97.89? Because this is exponential. Right, sir. It has been my journey, and in CAT, so I have this is my third CAT attempt. In CAT 2018, I scored 64 percentile. In 19 CAT 19, I scored 77, and during the preparation time, just around this time, last year, I was scoring around 40 to 45, 40 to 50 percentile in my mocks. Okay, so when you saw your scorecard, was it believable? So it was believable because of the journey I had before that. So I could see the changes coming in, and so that made me believe that I can score well. So we are definitely going to discuss a lot of strategy, जितना भी आपका preparation strategy रहा है, because मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे students हैं जिन्होंने लास्ट ईयर में कैट अटेम्प्ट किया होगा, 40-50 आया होगा, अभी मॉक्स में 40-50 आ रहा है, एंड नाउ दे आर इन अ पोजीशन कि हम लोग गिव अप कर रहे हैं, हमसे कैट नहीं हो पाएगा. सो फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस इंटरव्यू, आई रिक्वेस्ट कि आप यार पूरा देखना, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इनसाइट्स व्हिच आदित्य इज गोइंग टू शेयर एंड दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल एंड कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू यू. Before moving forward, Aditya, what is your background? Like, what is your 10, 12 graduation score, commerce, engineer, non-engineer? So if you would like to share about your profile. As sir, you just rightly said that I come from a very average background. So my 10th was pretty average. I scored 88.4 CGPA. Then I took commerce, and then in 12th I scored 84 percentage. And then I took BCom, and in BCom also the score was pretty average. I got 64 percentage. So comparing with the competition pool appearing for CAT, and especially aiming at IMs, it is very average. I would say below average. So Aditya, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है काफी सारे स्टूडेंट्स व्हेन दे वांट टू गो फॉर देयर एमबीए एंड दे वांट टू प्रिपेयर, तो वो सबसे पहले अपने ऊपर सेल्फ डाउट करके सेल्फ रिजेक्ट कर लेते हैं कि हमारा तो 80 80 60 वाला प्रोफाइल है, हम तो आईएम्स में जा ही नहीं सकते, हमारा तो कैट में स्कोर आ ही नहीं सकता. सो हाउ वर यू श्योर कि मुझे कैट के लिए जाना है, मैं कर लूंगा? बिकॉज आपने जब आसपास देखा होगा तो 999 प्रोफाइल है, 998 प्रोफाइल है, मेरा एक एवरेज प्रोफाइल है. तो हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ कि यार मुझे करना है, मैं कर लूंगा? So sir, that was still there कि मेरी profile है, that was my case also. But also back of the mind I also knew कि पीछे जो गया I cannot change that. What I can do is make some extra efforts and get a better score in CAT and do something to change what is coming ahead. So I believe this is a very important learning for all the aspirants, क्योंकि मैं भी यही बात बोलता हूँ कि try to work on the controllable factors. Do not think too much कि क्या हो चुका, मेरा प्रोफाइल बेकार है. Just think कि क्या आने वाला है और उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो. Exactly, Great. sir. So Aditya, you appeared for CAT before, right? You said that तुम्हारा 64 percentile था, then again you did not score very well. So how did you keep yourself motivated कि यार मैं हर साल CAT देने वाला हूँ? Because एक बार 60-70 आ रहे हैं तो you might have felt a lot of demotivation, right? कि मेरे से CAT नहीं होगा, which is the general trend of all the CAT aspirants, most of them. So that is there. So वो बहुत natural है वो आना. But at the same time, you have to be sure कि where do you see yourself after a particular set of years. So after a particular period, I see myself
managing a set of people or driving a particular growth of some product or something like that. So that was always there in my mind. So, and I know the pathway is through MBA journey. Like you have to take that journey to reach there. So for me, it was not about how many attempts that I have to give. For me, it was about the goal. Okay, that's very interesting because बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार स्कोर नहीं आया. So I always say in a lot of videos that a winner is another loser who tried once more, and you are a live Right? testimony of that, right? Yes, sir. Scoring less and then scoring and then getting into the I am fulfilling your dreams. Amazing. Congratulations again, Aditya. So Aditya, I will be discussing in very depth. So what was your daily schedule? जब आपने CAT 20 appear किया तो क्या आप daily कितने hours पढ़ाई कर रहे थे for the CAT preparation? So for me, it was like getting up and then just starting with my preparation. So I devoted as much time as I could with all the things that were going on. So my motivation was again that, like I said, it is about the goal that you see, and for that, it doesn't matter how many hours you dedicate. It is just the that end goal that you see, and uske liye jitna bhi hai, that is just an investment. So for me, if I had like 30 extra minutes out of something, I was devoting it to my preparations. तो आदित्य जब आप प्रिपेयर कर रहे थे कैट 20 में प्राइमरीली तो व्हाट वाज योर पेन पॉइंट कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो लगता था यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा सो आउट ऑफ वर्बल एलआरडी एंड क्वांट्स हाउ विल यू रेट इट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर कंफर्ट जोन So that is a very so there's a very funny story about it. So I have historically been very strong with quants, and my verbal is also fine. And logical reasoning, I was scoring well before the pattern change, but after the pattern change, I scored really bad in that. So there was a mock when I scored 1 marks in DILR. That was when I lost the control. I thought that now it is something that I have to do something about it. So in rating, I would still rate it as quants one, DILR second, verbal third. The funny thing about it is that as per my score, I got maximum marks in my DILR, then verbal, and then quants. ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग तो ओके तो आदित्य यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आप बार बार बता रहे हो कि मॉक्स में मेरा कम स्कोर था एंड हम लोग बहुत बार स्टूडेंट को बोलते हैं मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स में आपका क्या स्कोर आ रहा है वो मैटर नहीं करता बट मॉक्स से आपकी क्या लर्निंग है उससे आप नेक्स्ट मॉक में कैसे इंप्रूव करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है Right, बट sir. मोस्ट ऑफ द दैट एस्पिरेंट्स दे लीव आफ्टर 2 और 3 मॉक्स वो अपने कम स्कोर देखते हैं देन दे आर लाइक नहीं अब हम नहीं देंगे हमें डीमोटिवेशन होता है तो हाउ मेनी मॉक्स यू अपीयर्ड फॉर एंड जितनी बार कम स्कोर आ रहा था व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी So I cannot actually count how many mocks I gave. So there was a time. So around September, I was giving 1 mock per week. After that, I started for 2 to 3 mocks per week, and in from October mid onwards, I was giving 1 mock every alternate day. In November, I gave 1 mock every day. ओके So the सो reason सेम why पेयर I ऑफ did that, yeah, the reason why I did that is because you get a blend of questions and you get a real time experience of how the exam is going to be. Jitna zyada we get closer to how the exam is going to be, the more we train our mind to act accordingly. So wahi time pressure, wahi mix blend of questions, wahi sub, wahi platform, wahi pattern, so that prepares you for what is coming ahead. And that's why I never gave up on the mocks. I am a very I would say mocks are very important, and it doesn't matter how much score you are getting. It's important to give the mock and analyze it. So that is my that's what I feel. बट आदित्य ऐसा हुआ होगा ना बहुत बार कि 40% आ रहा है 30 आ रहा है 50 आ रहा है तो वो डीमोटिवेशन तो हुआ होगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी सी आवर Definitely, स्कोर एंड वी फील बैड कि यार क्यों नहीं हो रहा व्हाट वाज योर इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप sir, definitely that was the case. It is but natural to feel that way, and I have felt it many times. Seeing my score, I have, as I told, as I got 1 mark in DILR in one
mock, and that was really upsetting considering the hard work I had put in. So I so there was this one thing that happened to me. So I was scrolling through Instagram, and at that time I got to came across this story by StudyBUZZ, which said that there's going to be an advanced workshop, 30 days workshop. We will be covering every topic. So I thought, why not go ahead for it? Like, otherwise also just it is time for me to start revising. Let's go ahead with this. So it will give me some sort of schedule and to follow and like that. And that's what helped me during that phase, because I was anyways giving a mock a day, and with that I was attending the classes that you were giving. So at night at that time, so 9 to 12, 9 to 2 if I say correctly. So that so during that time I saw the scores getting a momento, getting into a momentum. So that So Aditya, if I ask you, because I remember you joined the CAT Advanced workshops, so what actually helped you in that? Because I want to understand that if any student is joining those workshops and he is currently at, let's say, 40 or 50 percentile, so what was your learning? Because I guess questions आपने काफी सारे practice करे होंगे. So right, sir. what was helpful, and probably you can tell about कि क्या चीज आप उससे learn करते थे, and then what was your next step? राइट सर. सो जब हम लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सो वी ट्राई टू टारगेट दोज क्वेश्चन विच वी थिंक कैन बी दी कैट क्वेश्चंस. सो वी टारगेट टफ क्वेश्चंस ओनली. उस टाइम पे हम लोग का माइंडसेट यही रहता है कि वैसा कुछ कर लो जो सॉल्व करके हो जाए. बट इन दैट रेस वी फॉरगेट वन थिंग कि बेसिक्स हम सब लोग भूलने लगते हैं, या फिर जो हमने स्टार्टिंग में करा होता है हम लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते. So what helped me during this workshop is कि you take us through a journey from basic to medium level to advanced level. So उसमें वो जो cover होता है, so that helps कि एक पता चलता है कि एक basic level के question में भी so it happens CAT में it can happen कि वो basic level का question डाल दें एंड यू गेट सो ट्रिक्ड, क्योंकि हम लोग की आदत होती है हम लोग वो एडवांस को लेके ही अपना एम रखते हैं. तो वो बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन जो कि अदरवाइज शुड नॉट टेक मोर देन 5 10 15 20 सेकंड्स, हम उन क्वेश्चन में गलती कर देते हैं. सो ये बेसिक टू मीडियम टू एडवांस वाला जो एक पैटर्न है, दैट हेल्प मी अलॉट. सो इसके लिए आई वुड से कि मतलब दैट वर्कशॉप वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज उसमें स्टेप बाय स्टेप जाना एंड अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा टॉपिक इजी है, एक ही टॉपिक के अंदर किस टाइप की वेरिएशन हैं वो समझना, दैट हेल्प मी. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये चीज मैंने बहुत बार देखी है, बहुत बार हम ये देखते हैं फ्रीक्वेंटली कि कैट एक्सपीरियंस को लगता है कि कैट मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड आई ऑलवेज टेल इन लॉट ऑफ वीडियोस कि ऐसा नहीं होता. देयर आर मिक्स ऑफ ऑल द क्वेश्चन, इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, एडवांस भी होगा, एंड टू अंडरस्टैंड कौन सा करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है. So if you Exactly. understand the art of picking the question and leaving the question, you are in a very good space, and probably that was uh, helpful for you as well. Interesting, Aditya. What is the important thing what you when you analyze the mock? So जब भी हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे मॉक्स एनालाइज करे हैं, आपने फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने स्कोर को बेटर होते हुए देखा होगा, नीचे जाते हुए देखा होगा, तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू एनालाइज अ मॉक? सर मॉक एनालिसिस में फॉर मी व्हाट वर्कड इज कि जो भी क्वेश्चन करा है, सो आई ट्राई टू एनालाइज द मॉक इमीडिएटली आफ्टर गिविंग दैट मॉक. उससे क्या होता है कि उस टाइम पे फ्रेश माइंडसेट में वही होता है जो हम लोगों ने उस टाइम पे सोचा था करते हुए. सो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज मेरे को पता है कि मैंने उन 2 घंटे में क्या सोचा, तो मैं इमीडिएटली आफ्टर दैट आई कैन कनेक्ट कि वो क्या सोचा गया था उस टाइम पे. बिकॉज एक दिन बाद वो सोचना एंड देन अगेन रिकनेक्टिंग कि उस टाइम पे क्या माइंडसेट था, इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो इसीलिए आई यूज टू डू इट जस्ट आफ्टर द मॉक, सो दैट वो फ्रेश माइंडसेट से उसी में मतलब उसी लॉजिक से कनेक्ट कर पाए. एंड उससे क्या होता है कि यू डोंट मिस ऑन एनी पॉइंट. जो उस पॉइंट पे आया था एंड क्या सही है, यू कैन देन कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड वेयर यू वेंट रॉन्ग. So that I believe is a good strategy to take up. Okay, that's interesting. I guess this is going to be very helpful for all the students. Also, Aditya, जब आप एग्जाम देने गए, so now talking about the D day,
what was your mindset on that day? Because हमने preparation कर लिया है, workshops भी कर लिए हैं, revision कर लिया है, mocks लगा लिए हैं, अच्छे marks भी आ गए, बेकार भी देख लिए. Now, what was your mindset on that exam day? So it is. I feel कि कोई ऐसे believe नहीं करेगा, but for me, so my CAT center was around 1.5 hour away. I drove to that center पूरे रास्ते गाने सुनते हुए, and the only thought that I had in my mind was कि जो करना था वो कर लिया है. अब now I cannot change anything. I cannot learn or unlearn anything at this point. What I can do is try to relax myself, listen to the best music that I can in that phase, and give my best with the best mood that I can bring in. उससे ज़्यादा अब इस point पे I cannot do anything. So I calmed myself with good music, went to the exam, and luckily I aced it. Great, Aditya. That is a very inspiring story because exam वाले दिन I guess most of the people when they appear for the exam and वो जैसे ही timer on होता है वो panic button on हो जाता है. अगर हमसे वो एक question नहीं हो रहा था हम next section खराब कर देते हैं. And this is very important for all the CAT aspirants because CAT एक ऐसा exam है जो आपकी mental toughness को भी test कर रहा है. And Right, sir. if you do not calm yourself, no matter how well you are prepared, there is a chance that you might screw up your exam. So it is very important to have that composure during the whole exam. एक क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट वाला हो जाएगा. एक सेक्शन नहीं हो रहा तो नेक्स्ट सेक्शन अच्छा करके हम बेटर कर लेंगे. बट उस पर्टिकुलर 2 hours में आई गेस यू शुड appear and you should attempt to the best of your ability, right? Right, sir. Definitely. Great, Aditya. So next question, Aditya. This is a very interesting story which you have shared, and I probably believe that this is going to add a lot of value. What are your long-term plans? So after graduating from one of the IIMs, what do you think? Where do you see yourself? या फिर क्या vision है अब आगे life में? सर जैसे एक हर MBA aspirant का रहता है, so I also see myself going to the upper management, and through this knowledge that I've gained in these 2 years, and eventually reaching to a point where I can impart that knowledge and my experience through an example, putting an example. नहीं, I always believe कि आप मतलब you are already example for all the CAT aspirants who are watching you right now, because बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कैट एग्जाम जनरली एक टॉपर ही क्रैक कर सकता है जिसका 10-12 में 95 प्लस रहा हो. बट सीइंग योर स्टोरी आई बिलीव दिस इज गोइंग टू इंस्पायर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स कि यार आपका एवरेज प्रोफाइल है, उसके बाद आपके कैट अटेम्प्ट्स जो रहे हैं उसमें 60-70 परसेंटाइल रहा है, एंड देन टुडे यू आर फुलफिलिंग योर ड्रीम. So what is the Right. final message, Aditya, you would like to give to all the CAT 22 aspirants? जो भी एवरेज कैंडिडेट है जिसको अपने ऊपर डाउट है आज कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझे अदर एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर वो अभी तक करेज ही नहीं आ रहा कि यार मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ बिकॉज उन्होंने मॉक्स में शायद अपना कम स्कोर देखा. तो व्हाट इज दैट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल दोस पीपल बिकॉज यू वर इन द सेम बोट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? So, sir, my message would be: do not lose hope. So, for me also, the journey hasn't been easy. I have seen two failed attempts, two bad attempts at cat, real cat, and some horrible mock experiences. But eventually, you just need to have that end goal. एक end goal रखना बहुत जरूरी है, where you want to see yourself, and उस direction में जाते हुए, there will be hurdles, but you have to keep going on. That is how you reach there. Otherwise नहीं जाओगे, अगर वहां पे किसी point पे रुक जाओगे तो otherwise भी you cannot reach that goal. The only way you can reach that goal is through trying. So my message would be not to give up. बैड स्कोर आते रहेंगे, मॉक्स में एक बार ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट दैट शुडंट बी योर सेट बैक फैक्टर. यू शुड टेक दैट एज अ लेसन एंड वर्क ऑन योर the areas of concern, and then reach towards your goal. So I believe this is going to add a lot of value and काफी इंस्पिरेशन मुझे खुद लगा बात करके, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बोलता हूँ that a winner is another loser who tried once more, and you are a real life testimony for that. I wish you all Yes, the best, Aditya. You are going to do wonders because the kind of dedication you have, be it in your mocks, be it your repeated CAT attempts, but not leaving your goal, probably is going to set an example for a lot of CAT aspirants. Thank you so much, Aditya, for definitely. being in the show. Thank you so much, sir.